and the concepts which got cleared, the hard work of the teacher, dedication, and I will really appreciate the hard work of the Abdul Subhan sir. To serve the nation, to serve the Ummah. So I thought I can get into this field and serve the people also. Alhamdulillah, I thank my parents, Abdul Subhan sir, the teachers and everyone. This inspiration helped me to believe that you can achieve. And then I repeated a year, I took a drop, and alhamdulillah I got 625 marks in this attempt. I personally believe that what goes back comes back. तो अल्लाह की राह में काम करना है, थोड़ा अच्छे मुसलमान डॉक्टर बनना और एक अच्छा मुसलमान डॉक्टर बनना और कम्युनिटी की सर्व करना. To make everyone proud, and alhamdulillah I have scored more than 600, and I have Falcon to thank for. I have all my teachers, Subhan sir, my parents. I really have to thank my parents because they sent me in hostel even though they did not want to. And alhamdulillah, all the teachers, Subhan sir, their encouragement, the teaching, it's already top class teaching. फरमाइए सर। हर साल फाल्कन के दामन में खुशियां आती हैं जब भी नतायज आते हैं, लेकिन 2024 के जो नतायज हैं, फाल्कन ने अपने तमाम तर रिकॉर्ड्स तोड़े। फाल्कन के स्टूडेंट्स, पूरे फाल्कनाइट्स ने ऐसे नतायज दिए जिससे पूरा हम खुद दंग रह गए हैं देख के इनके नतायज को, क्या ऐसे बेहतरीन नतायज है। पहली मरतबा हर साल हमेशा पहले जब होता था कि 650 के ऊपर कभी कभी एक स्टूडेंट रहते थे, आज 650 जो नीट के मार्क्स हैं आउट ऑफ 720, उसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 8 नहीं, 10 से ज्यादा बच्चे 650 जो टॉप मोस्ट परफॉर्मेंस हो सकती है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा परफॉर्मेंस बच्चों ने दिया है फाल्कन के। अल्हम्दुलिल्लाह हमें सबसे बड़ी खुशी ये है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो इनका सिलेक्शन है वो रेशियो फाल्कन का कर्नाटक में हाईएस्ट बनता नजर आ रहा है। मोर देन 120 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेडिकल सीट लेने के काबिल बन रहे हैं। ये जो नतायज हम देख रहे हैं उसके हिसाब से ये हमारे जो परफॉर्मेंस है स्टूडेंट्स के, बड़े यूनिक परफॉर्मेंस इसलिए है क्योंकि कर्नाटक में नीट के ताल्लुक से और पूरे इंडिया में ये हो गया है कि ये रिपीटर्स और रिपीटर्स और रिपीटर्स वालों का सीट एग्जाम हो गया है, लेकिन 50%, 50% रिजल्ट ऑफ फाल्कन के जो टॉप परफॉर्मर्स है वो पूरे फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने वाले बच्चे हैं जिन्होंने नीट का एग्जाम पहली मरतबा लिखा है, 12th का बोर्ड एग्जाम लिखा है और 12th के बोर्ड एग्जाम में टॉप मार्क्स लाए हैं और नीट में उन्होंने 650, 660, 670 ऐसे परफॉर्मेंस बच्चों ने लाए हैं। ये इट इज एन इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस। द एंटायर क्रेडिट ऑफ दिस एफर्ट्स, दिस परफॉर्मेंस गोज टू दिस चिल्ड्रन जो उन्होंने अंत तक मेहनत की है। द काइंड ऑफ एफर्ट दिस चिल्ड्रन हैव डन ऑल दिस। Here we have only few who could come in the camera, but there are so many students who could not travel all the way from different parts of the state and the country who have done really remarkably well. The message which we have today, the kind of efforts the children has done,
that irrespective of their background, it is not required for a child's father to be a doctor, for them to become doctor. Anybody and everybody can become it. And the children, we have those who have cracked IIT also, who have gone 99.3 percentile in JEE. We have students, those who have cracked CET, who with 100% marks in CET, which is a state top result in bio and different subjects. This is the celebration of all the efforts of these many. There are so many Falconites, those who have done incredible efforts over the last 2 years, and the teachers community of Falcon, those who put effort day and night here, the teaching, non-teaching staff of Falcon, and above all the parents who have trusted the institution, that they had a trust on the belief on the system of Falcon. This is the support of their parent, this parent, that we could able to give this result. Alhamdulillah, we thank everybody for this incredible NEET feast, CET feast, and the JEE results. So now the admissions are going on for the next academic year, the new academic year for NEET. That is, alhamdulillah, we have started our regular integrated program already. We have announced our NEET long-term batch, which is going to start from 10th of June. Alhamdulillah, we have completed 3 batches already for that. It is just the beginning of the system which we are going to see, where it is the process of empowerment for all those who have the dream in their life, and we want to be the one who turn their dreams into reality. Assalamu alaikum wa rahmatullah. I'm very glad to announce my result, that is 676 marks. I am very thankful to Subhan sir for bringing up the students who actually dream and dedicate themselves to fulfill their dreams. I would like to thank my parents who have been my pillars of support. Also my sister who has been motivating me all throughout my journey. And I would thank all the teachers for bringing such an excellent result of Falcon group of institutions. You have for your fellow students who are studying, or I would suggest all my juniors and NEET 2025 aspirants to dedicate yourself until and unless you don't achieve your goal. Hello everyone, my name is Kokila Aishwarya and I have secured 664 marks in NEET. I have to thank the Falcon group of institution to provide me and teach me. Their coaching is very good, and I would thank the teachers. Their teaching, I have never seen their teaching like nobody have teach that extent, and I would like to thank my parents and work hard until you get what you want. And so how was your family support? What your father does? my father does welding jobs and contracts, and we are not that rich family or anything, but hard work can make everything success. Hello everyone, I'm Dhanyashri, and today I'm standing here with a score of 645 in NEET 2024, and it is my 3rd attempt. I had given 2 attempts and I had secured 314 in my first attempt and 325 marks in my second attempt, and I have a huge regret that I could have joined Falcon very early so that I could have cracked it in my first attempt, which is very much possible. Seeing those people who had cracked it in their first attempt, today I can see them. Actually, my family support is very crucial, because last year I was almost gave up that I won't go for MBBS because it is not meant for me, because even last year I had did the hard work, but I think so I didn't have the direction which I got in Falcon. The direction from Subhan sir, the direction which I got from my teachers is very impressive, and my brother supported me to take this drop, and he told that we are giving you a chance and we believe in you that you can do it. So I am very thankful to my mom and my brother. I am very grateful to them,
and my mom is my role model actually. She had gone through so much, and we have only one dream, that whatever my mom had went through, we want her to see our success, because whatever she did, she just did that for us. So I'm very grateful to my mom. It is really difficult when you have a challenge at home. There is her father is not there, and at that moment to continue dreaming to become doctor when you are not able to do, not in first and second attempt. I think hats off to her and her family who stood by her, and it's a great, incredible achievement, doctor. My name is Ifat Fatima. I am from Bangalore. I live here. My father is a school principal. My mother teaches math. And we knew about Falcon. We joined here, and these 2 years have been one of the most wonderful years. Not just because of the result, but because of the journey itself. Because of what I learned and developed as a person. Here, you not itself develop academically, you not grow with your knowledge, but you also learn the lessons of life, which are so essential to build you as a human being, to build you as a person itself. So for that, I would like to thank Falcon, and I will remember the Falcon journey of mine for the rest of my life. All have written their 11th and 12th exam this year. This is the first attempt of theirs in the NEET, and then the first attempt they have crossed 660. That's an incredible. Assalamualaikum. मेरा नाम सादिया फातिमा, and when I'm very much thankful to Allah Subhanahu wa Taala. From His grace, I got this Falcon institution. I never thought that I would speak in front of a camera, and I studied in a Kannada school where nobody know English. And here this journey of Falcon is amazing, because your teachers are just not because of the sake of teaching. They taught us many things, and the concepts which got cleared, the hard work of the teacher, dedication, and I will really appreciate the hard work of the Abdul Subhan sir. I have never seen such a person. I have searched colleges across Karnataka, and I felt this would be the best integrated coaching all over Karnataka. I have went for many colleges where I heard the only coaching fees is a lot, which our normal family cannot afford. And here Abdul Subhan sir is working really hard, and I will pray for him that he should get more success from this. I'm really thankful to Allah that I got this institution from my Bluebell Academy, where our tuition sir, he suggested me to go into this college. Thank you so much. आपके वालिद क्या करते हैं, कैसे आपको फैमिली में सपोर्ट रहा? मेरा नाम सुंदर सर. I have repeated one year. जब मेरा पहला स्कोर आया था, I got 495. And my father had called to Subhan sir, and he asked what to do next, and Subhan sir had told, you can repeat 1 year. He motivated my father to make me repeat, so that he was knowing I'll get 650. And his motivation every Sunday, he used to come, he used to leave his all the work, and he used to come to us, he used to distribute chocolates, and if we get low marks, he used to motivate us. It's a lot from him, sir, and I think my father is a he's an electrician, and he works very hard for me, and he every time motivates me. I feel he's the best father. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nusheen Fatima. I have scored 645 in NEET. This is my third attempt, and Alhamdulillah, I have to thank Allah Subhanahu wa Taala for granting me sabr of 2 years, granting me sabr to travel from so far every day to college. Alhamdulillah, I thank my parents, Abdul Subhan sir, my teachers, and everyone who were the pillars of my support, encouragement, and belief in me, make me stand here today. Alhamdulillah. First of all, I would like to, I'm thankful to Allah, and then I'm very much thankful to my parents, very grateful to them. In my first attempt, I got 488 marks. I never thought that I would get a chance to repeat, but this institution helped me to believe that you can achieve. And then I repeated a year, I took a drop, and Alhamdulillah, I got 625 marks in this attempt. The efforts of Subhan sir are tremendous, and that made it possible to score this marks.
everything is possible because of efforts of Subhan sir. I believe is sir used to tell, you score here, you score in the exam, and if you don't score, no magic is going to happen in the final exam. That made me believe, and very much thankful to this institution, all the teachers, all the not teaching staffs, everything. I am Juveria Sutri. Alhamdulillah, today I stand in front of you with 607 marks in my first attempt, and I have a lot to thank Falcon for and Subhan sir for, because in the starting I didn't have a lot of motivation, but after coming here, the motivation in me skyrocketed. I really wanted to do well. I wanted to make everyone proud, and Alhamdulillah, I have scored more than 600, and I have Falcon to thank for. I have all my teachers, Subhan sir, my parents. I really have to thank my parents because they sent me in hostel even though they did not want to, but they supported me and they helped me along the way. So I have a lot of people to be grateful and thankful for. Assalamu alaikum. My name is Anas and I'm from Bangalore. And my first attempt, I scored around 480. My most of the time weakest point was physics, which I knew before even repeating that I had to remove the fear of that physics. So I didn't know where to repeat though. Then I met someone, Hanif sir from Puttur Community Center. They helped me very well. They made me admit over here, and Alhamdulillah, all the teachers, Subhan sir, their encouragement, the teaching, it's already top class teaching. You can't judge anything and just by seeing it. And What do you want to do after completion of your MBBS? MBBS, I think of doing MS in neurosurgery. Then I'll be doing. I go to a community center in my near home. I work there. I am a social aspirant. I work there, and I wish to develop my area. I never imagined myself wearing a white coat and becoming a doctor. All my father told me every time was to serve the nation, to serve the ummah. So I thought I can get into this field and serve the people. Also, I like to teach people. So education is also one which I would try to spread in the serve the ummah. your name? I'm from Chikmagalur. What's your marks? Thank you. I scored 646. एक्चुअली मेरा नाम मोहम्मद हसन रजा है। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, जोर से। नॉर्थ इंडिया यूपी से बिलोंग करता हूँ। मेरे पेरेंट्स का मेन गोल जो था इधर आने का वो था एजुकेशन क्वालिटी, जो नॉर्थ इंडिया में नहीं रहती जितनी साउथ इंडिया में है। उसी वजह से मेरे अबू चाहते थे कि मतलब मैं कुछ ऐसा बनूं जिसकी वजह से मैं आगे जाके जो अपनी नॉर्थ इंडिया की क्वालिटी है एजुकेशन की उसको बेटर कर सकूं, अपनी कम्युनिटी को सर्व कर सकूं। एंड देन वी फाउंड आवर Falcon. We met Subhan sir. My father came, and my father has a very good connection with Subhan sir. My father is Mufti. Yeah, he's a scholar, Islamic scholar. My father always, used to say, listen, Subhan sir, whatever he say and all. तो इंस्टीट्यूशन का पूरे स्टाफ का सर का कैसा सपोर्ट रहा आपकी पढ़ाई में? इनिशियली फर्स्ट सपोर्ट जो मिला था वो सुभान से ही मिला था। देन टीचर्स बहुत अच्छे हैं, तो हमेशा मुझे ये याद रहेगा कि टीचर्स मेन होता है, स्टूडेंट का उतना बड़ा रोल नहीं होता जितना टीचर्स का होता है, और वो टीचर्स थे इधर जिसकी वजह से मैं आज जो भी बन सका हूँ। मतलब मैंने सोचा नहीं था, बट फाइनल स्कोर किया आपने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हसन रजा है। आई स्कोर 640। आपके वालिद साहब, और कैसे आपने ख्वाहिश की पढ़ने की? मेरा नाम अमीन रहमान है। मेरे वालिद प्रिंटिंग प्रेस का काम है बेंगलोर में, और मेरे अम्मी वालिदा वो हाउस वाइफ है। मैंने 657 साल स्कोर किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा उतना नहीं आया था, मुझे सीट नहीं मिली। इस साल 657 आया, सब अल्लाह की बदौलत है। टीचर्स, सुभान सर और मेरे पेरेंट्स का भरोसा, उनका जो उनके भरोसे की वजह से मैंने हर रोज प्रोग्रेस करने की कोशिश की। उनके भरोसे और उनका करेज, उन्होंने मेरे पर बिलीव किया था। टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ सब ने मेरे पर बिलीव किया था। इंशाल्लाह मेरा ये आई पर्सनली बिलीव दैट व्हाट गोज बैक कम्स बैक। तो अल्लाह की राह में काम करना है, थोड़ा अच्छे मुसलमान डॉक्टर बनाना, तो एक अच्छा मुसलमान डॉक्टर बनना और कम्युनिटी को सर्व करना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जोर से। मेरा नाम मोहम्मद आसिक है। मेरे पापा एक छोटा सा फैक्ट्री में काम करते हैं, तो मेरे को ये 10th में 625 आउट ऑफ 625 मिला था। तो उसके बाद था कि कौन सा कॉलेज चूज कर, बेस्ट कॉलेज। तो हमारे बैंगलोर में एक
जब एट दैट टाइम मैं बैंगलोर में था, तो बैंगलोर में पीसीसी नाम का एक कम्युनिटी था, वो मेरे को इधर आने का रेफर किए थे। एट द सेम टाइम सुभान सर भी मेरे पापा को कॉल किए थे। तो बिफोर इधर आने से पहले मुझे नहीं पता था कि नीट क्या होता है, नीट क्या चीज है, कि ये फर्दर सेकेंड ईयर के बाद करना क्या है। आई एम ग्लैड दैट मैं शाहीन आया और फाल्कन आया। फाल्कन की वजह से इधर मेरा सेकेंड ईयर भी निकल गया, नीट भी निकल गया। मेरा फर्दर ड्रीम होगा कि एक मेरा रोल मॉडल अगर बताएंगे तो पहले मेरे पेरेंट्स होंगे, सेकंड अब्दुल सुभान सर होंगे। सुभान सर के जैसे बस हमारा कम्युनिटी को जितना हो सके उतना हेल्प करने का कोशिश करूंगा। आई स्कोर 646 in my first attempt. जोर से बोलिए। Assalamu alaikum. Myself Muhammad Maskouchi. This time I'm getting a score 608. My dad is a businessman and I have two sisters. Alhamdulillah, both of them are doctors. They studied from here itself, Falcon institutions. Inshallah, this time our Muslim community is lagging far behind. So the purpose of our three of them are to serve our community. इंस्टीट्यूशन से कैसे सपोर्ट आपको मिला, कैसे कामयाब हुए, आगे क्या करेंगे? तो मेरा नाम मोहम्मद फरखान है और मैं सिरसी गांव से हूँ, ये उत्तर कन्नड़ में रहता है। मेरे वालिद साहब एक डॉक्टर हैं और मेरी अम्मी जान वो एक टीचर है, हाई स्कूल टीचर है। तो जो मैंने एग्जाम लिखा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इसके दो अलग अलग लेवल्स होते हैं, एक होता है मेंस लेवल का, एक एडवांस लेवल का। मैंने मेंस लेवल का जो एग्जाम है वो मैंने अटेम्प्ट किया और उसमें मेरे आए 99.29% तो इसका जो है अवेयरनेस ज्यादा नहीं है लोगों में, बस इसका अवेयरनेस एक क्रिएट किया है। और स्पेशली इस इंस्टीट्यूशन में आने के बाद इतना कॉन्फिडेंस आया था। इससे पहले यहाँ पे इतना रिजल्ट आया नहीं था। जो एग्जाम मैंने लिखा उस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो इस इंस्टीट्यूशन में पहले उतना रिजल्ट नहीं आता, लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम आई दैट such a result has come. So I thank everyone and thank especially Mr. Abdul Subhan sir for encouraging me throughout my journey of this JEE Advanced. से आपने मोटिवेशन हासिल की और कैसे मेहनत करी, इंस्टीट्यूशन का क्या सपोर्ट रहा, आगे क्या करेंगे? सर मेरा नाम मोहम्मद अमीनुद्दीन है और मेरे पापा का गाँव में छोटा सा कपड़ों का दुकान है। मतलब बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं और मेरा सेकेंड पीयू में भी मैं मतलब सेकेंड पीयू और फर्स्ट पीयू मैंने गांव में पढ़ाई की और कोचिंग उतनी अच्छी नहीं थी। फर्स्ट टाइम मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सक्सेस मिल गया नहीं, और सेकेंड अटेम्प्ट में जब हमारे अब्बा के थोड़े दोस्त के बच्चे मतलब यहाँ पे उन्होंने भी एडमिशन लिया था सेकेंड पीयू के बाद, और उनके रिजल्ट अच्छे आए, मतलब रिपीट करके। तो अब्बा ने मुझे हौसला दिया कि मैं भी एक और बार कोशिश करूं, और वो इसीलिए मेरा एडमिशन यहाँ किया है और मेरे मार्क्स 631 आए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तारिक अजीज है। मेरे वालिद साहब एक सारी वर्कर है और मदर हाउस वाइफ है। अभी मैंने 12th क्रैक किया है, उसी के साथ पैरेलली नीट भी क्रैक हुआ है। 12th क्रैक होने के टाइम पे थोड़ा नीट से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि बच्चे दोनों पर फोकस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इधर फाल्कन में ऐसे ट्रेन करते हैं कि दोनों क्रैक हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 12th में भी 93.6 आया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नीट में भी 617 मार्क्स आ गया। इंशाल्लाह गवर्नमेंट सीट MBBS की मिल जाएगी। और बस मैं यही कहना चाहूंगा कि ये ऐसा इंस्टीट्यूट है जो मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे नहीं भी रहते वो भी पढ़ने वाले सीख जाएंगे, क्योंकि मैं 10th में ऐसा था नहीं, जैसे फाल्कन ने मुझे बना दिया, कैपेबिलिटी यहाँ पे मतलब बना देते हैं स्टूडेंट्स को। तो बस दिस इज द बेस्ट कॉलेज आई कैन रिकमेंड फॉर द स्टूडेंट्स हु आर अपकमिंग फॉर लाइक दे आर ड्रीमिंग टू जॉइन फॉर मेडिकल सीट्स। ओके, थैंक यू।